Just see the next concept. B and T cells, already it has been discussed. Wait for 1 minute, some are in waiting list. Shubham. That immature lymphocytes differentiate into antigen-sensitive lymphocytes. When lymphocytes mature, they move to the secondary lymphoid organs such as the spleen, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches in the small intestine, and appendix. It is inside the secondary lymphoid organs that lymphocytes interact with antigens and proliferate to form effector cells. The spleen is a large bean-shaped organ located in the upper left part of the abdomen, protected by the rib cage. It chiefly contains lymphocytes, erythrocytes, and phagocytes. Already it has been discussed yesterday. It acts as a large reservoir of blood to be supplied in times of emergencies like hemorrhagic shock or excess loss of blood due to cuts or injuries. It also plays the role of an RBC graveyard by removing old or damaged RBCs from the body. Apart from the lymphoid organs, the human body has clusters of lymph nodes in places such as the neck, underneath the arms, and in the groin. Here you can see the structure of lymph node. It has been told already to you that lymph node is a circular structure. पूरे ये जो पूरा अभी तुम्हारे स्क्रीन पे ये जो lymphatic system दिखाई दे रहा है, ये जो veins दिख रही हैं, these are not part of blood vascular system, these are part of lymphatic system. इन lymphatic system पे जगह जगह पे गांठ जैसा structure होता है, which is called as lymph nodes. Lymph nodes trap microbes and antigens that enter lymph and tissue fluid. Okay, what is the role of lymph node? It helps in trapping pathogens. Lymph क्या है ये हमने पहले पढ़ लिया है. What is lymph? Anybody of you can tell me what is lymph? Anybody raise your hand? Those who are knowing lymph. बहुत आसान है. कोई नहीं. हाँ ब्यूटी बोलो, तुम्हारा तो अनम्यूटेड है. तो बॉडी फ्लूइड होता है. कहाँ पाया जाएगा ये? सर जहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है वहां पे पाया जाता है. करेक्ट. जहां पर डायरेक्ट ब्लड नहीं पहुंचता है, एट दैट प्लेसेस लिम्फ इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी. उस लिम्फ में जो माइक्रोब्स हैं उनको ट्रैप करने का काम कौन करेगा? लिम्फ नोड्स करेंगे. क्लियर? लिम्फ नोड्स, उस लिम्फ के अंदर अगर कोई पैथोजन माइक्रोब है तो उसको ट्रैप कर लेगा. ओके, इफ टुडे देयर इज ऑल ऑफ अ सडन देयर इज पावर फेल्योर, अगर आज लाइट अचानक से जाती है तो इन दैट केस यू पीपल विल लीव द क्लास, बिकॉज टुडे आई डोंट नो व्हाई I was not able to connect the class with this computer as well as mobile. Daily मैं दोनों से एक साथ connect होता हूँ, but आज नहीं हो पा रहा है due to any reason. I don't know why. So in that case, if there is power failure, so I will not be able to disconnect the meeting. In that case, you should leave the class immediately if there is power failure. Okay. Now see. These antigens trapped inside the lymph nodes that activate the lymphocytes to produce antibodies, resulting in an immune response. Lymphoid tissue called mucosal-associated lymphoid tissue. ये एक नया वर्ड होगा. If you will go on the name mucosal associated lymphoid tissues, means already we are knowing the word mucus. Mucus कहाँ present है? It is present in that part of our body where there is movement of any molecule is taking place, like complete digestive system, circulatory system, urinogenital system. जहाँ पर movement हो रहा है वहाँ पर mucus present होगा. इस म्यूकस से एसोसिएटेड, मतलब जहां पर म्यूकस होगा वहां पर भी लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, विच इज कॉल्ड एज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. नाम से समझ में आना चाहिए कि द प्लेस वेयर म्यूकस इज प्रेजेंट, एट दैट प्लेस lymphoid tissues are also present, which is commonly called as mucosal associated lymphoid tissue. Or node is located inside the epithelial lining of major tracts like the respiratory, digestive, and urogenital tracts. The T cells, B cells, and macrophages present in mold help regulate mucosal immunity. Okay, you can write down somewhere
that the name of cells which are present या which are associated with malt. So the major cells which are associated with mucus are B cells, T cells. These are part of lymphocytes. And another is macrophages, which helps in providing immunity by engulfing any foreign agent. कई बार ये डिस्कस हो चुका है, ठीक है। ये जहां जहां पर म्यूकस प्रेजेंट होगा वहां वहां पर ये सेल प्रेजेंट होकर हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। Constitutes about 50% of lymphoid tissue inside the body. Therefore, the immune system effectively comprises the lymphoid organs, lymph nodes, and tissues, protects the human body from invasion by pathogens and microbes. One box is available on your screen. Here you can see virus. Any word which any you people are not knowing, एक word इसमें होगा मेरे ख्याल से जिसके बारे में नहीं पता होगा। वो कोई ऐसा है जो बता सके, जिसको सब पता हो, या कोई word जो नहीं पता हो? Anybody raise your hand? The word which you are not knowing? या फिर मैं पूछूंगा फिर नाम लेके? सबको सारा पता है? खुशबू, प्रीति, हाँ प्रीति बोलो। तो जो सेकंड वाला है वो नहीं पता। सेकंड वाला कार्सिनोजेन। पलक अनम्यूट योर माइक, खुशबू अनम्यूट योर माइक। खुशबू अनम्यूट योर माइक। सर मेरे यहाँ बैकग्राउंड नॉइस है। खूब हल्ला में ऐसे बैठे ही रहो कि सुनाई ना दे कुछ। कार्सिनोजेन क्या होता है? व्हाट इज कार्सिनोजेन? सर कैंसर कॉजिंग सेल्स या पैथोजेंस को कार्सिनोजेन कहते हैं। फिर से बोलो। सर कैंसर कॉजिंग पैथोजन या सेल्स को कार्सिनोजेन कहते हैं। अच्छा, कैंसर सेल से होता है क्या? सर पैथोजन बोला मैंने। अच्छा, पैथोजन मीन्स व्हाट? पैथोजन इज लिविंग और नॉन लिविंग? पैथोजन इज लिविंग और नॉन लिविंग? सर लिविंग। लिविंग। कैंसर किससे होता है? किस लिविंग पैथोजन से होता है? सर कार्सिनोजन मतलब वही होता है ना कि जो कोई ऐसा सब्सटेंस जो कैंसर फॉर्म करता हो। जितने बार आंसर बता रही हूँ बदलता जा रहा है। पहले बोली कैंसर कॉजिंग मतलब जो सेल्स, फिर बोली पैथोजन, सब उसके बाद तीसरी बार सब्सटेंस हो गया। ऐसे कैसे काम होगा? यस ब्यूटी, वेट वेट पलक वेट, ब्यूटी व्हाट इज कार्सिनोजन? सर कार्सिनोजेंस कैंसर कॉजिंग वायरस होता है, इसके अंदर HIV आता है। फिर से बोलो और बना दिया। सर कैंसर कॉजिंग वायरस होता है, मतलब जो एजेंट होते हैं इसमें बायोलॉजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एंड केमिकल एजेंट्स आ सकते हैं। अरे तो उन्हीं कितने को बोलते तरीके हैं। का पहले बोल रहे हो, कैंसर कॉजिंग वायरस, फिर बायोलॉजिकल एजेंट, फिर फिजिकल एजेंट, एक ने सेल बना नहीं, दिया, फिर पैथोजन बना दिया। इतना तो कैंसर हो जाएगा तो दुनिया में सबको कैंसर से ही सारी दुनिया मर जाएगी। कार्सिनोजेंस जो होते हैं वो कैंसर कॉजिंग एजेंट आते हैं, इसमें फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं। एक वर्ड में बोले तो द कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस। क्लियर? वो एजेंट्स सेल्स नहीं होते हैं, कैंसर सेल से नहीं होता है, या तो रेस से होगा या किसी केमिकल से होगा, इस तरीके की चीजों से कैंसर होगा। क्लियर? कैंसर देयर इज नो सेल टिल नोन व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग cancer. So the box which is available on your screen, I think except carcinogen all word is clear to you. Virus everybody is knowing. Carcinogen means cancer causing agents, pollution, bacteria, germs, fungus and parasite. These all words you are knowing. See what is available, what is present next. Okay, इसमें इतना ही था। किसमें? इम्यून सिस्टम तक में हमारे पास what we have to study. Now it is completed. Anybody is having any doubt regarding immune system, you can ask. Otherwise, we will move to next topic. If any doubt is there regarding immune system, to anybody you can ask. Otherwise, we should proceed for the next topic. Strength is 20. No doubt to anybody?
Okay, first let me see what is available. Wait for 1 minute, everybody. Let me see what is available. Next topic in this format. Okay. Since 1981, when AIDS was... Okay. Now see the book, page number 154. Our next heading is HIV. See it very carefully. One of the very important topic of this chapter. 100% question is going to come from this topic. One more topic I have told you, that was related to malaria. Malaria was very important. The second most important या major topic of this chapter is AIDS. बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग इस पे जब फाइनल एग्जाम में वाइवा के लिए प्रोजेक्ट बनाना होता है तो many of you people prepare the project related to this topic, that is AIDS. वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेनी क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इफ यू हैव प्रिपेयर्ड टॉपिक रिलेटेड टू एड्स और एनी डिजीज. ओके, तो द फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू नो अबाउट एड्स इज इट्स फुल फॉर्म. इसका फुल फॉर्म स्पेलिंग के साथ जरूर याद हो जाना चाहिए. मेनी टाइम्स एग्जामिनर्स यूज टू आस्क राइट द फुल फॉर्म ऑफ एड्स. So it is very simple. You can open page number 54. There it is available. Acquired immunodeficiency syndrome. If you will go on the word acquired immunodeficiency syndrome. Okay, Palak, tell me the meaning of word acquired. Your mic is सर जो बाय बर्थ नहीं होता है, वो आगे जाके होता है. correct. Immunodeficiency means what? सर इम्यून में जो डेफिशिएंसी, मतलब इम्यून को किसी चीज की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हम लोग की बॉडी को अटैक करने लगते हैं. Syndrome means what? सर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, करेक्ट. बहुत अच्छा बता रहे हो. ये ध्यान रखेंगे कि एड्स को हम किसी डिजीज में नहीं रखते हैं. वी आर नॉट कैटेगराइजिंग इट इन डिजीज, वी आर कैटेगराइजिंग इट एज सिंड्रोम. इट मींस व्हाट? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं. तो व्हाई एड्स हैज बीन नॉट कैटेगराइज्ड अंडर एनी डिजीज? व्हाई? बिकॉज़ इट इज नॉट डिजीज, इट इज सिंपली what happens in this disease our immune system, there is deficiency of immune system. तो deficiency means ऐसा नहीं कि WBC है ही नहीं, but the property by because of which WBC are known. WBC जिस property के लिए जाने जाते हैं वो property कम हो जाती है. मतलब ये एक वर्ड में कहना हो कि हमारे immune system का protection का जो capacity है, या हम ये कहें कि immune system की जो मारक क्षमता है, मिसाइल्स बनती हैं तो इसका मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है, या इस तरीके का सुना होगा, आता रहता है. ठीक वैसे ही यहाँ पर है कि इम्यून सिस्टम की जो कैपेसिटी है, दैट कैपेसिटी डिक्रीजेस, व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर. अब अगर किसी के इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाए किसी में, तो क्या होगा? सपोज देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, कफ, कोल्ड. उसको कुछ भी होता है, अगर उसके अंदर इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी है और उसको कुछ भी होता है, तो व्हाट विल हैपन? दैट पर्सन कैनॉट ओवरकम विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. अगर किसी को खांसी हो गई, उसके अंदर पहले से ये सिम्टम्स हैं, या HIV का वायरस उसके अंदर पहले से है, तो उसका इम्यून सिस्टम इस लायक नहीं होता है कि वो उसको उस खांसी से ठीक कर सके. इट मीन्स व्हाट? कि वो पर्सन का खांसी नहीं ठीक होगा, या बुखार हो गया तो बुखार नहीं ठीक होगा, एंड दैट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. बात समझ में आ रही है ब्यूटी? यस सर. ठीक है, तो इसमें डेफिशिएंसी हो जाएगी किसकी? इम्यून सिस्टम की, जिसकी वजह से वो इंसान बहुत कमजोर हो जाएगा. कमजोर मतलब दुबला पतला नहीं हो जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाएगा. जिसका ड्रॉबैक क्या होगा कि उसके बाद अगर कोई भी वायरस या कोई भी पैथोजन उसके अंदर एंटर करता है तो वो इंसान उससे रिकवर नहीं कर पाएगा. क्लियर? यस सर. The positive organism for HIV, for AIDS is HIV. Means what? Human immunodeficiency virus. Clear? ये ध्यान रखेंगे. कई जगह इसको जब एग्जामिनर पूछता है तो तुम लोग में से बहुत सारे लोग बता दोगे ह्यूमन इम्यूनोवायरस. ह्यूमन इम्यूनोवायरस जैसी कोई चीज ही नहीं है. Human immunodeficiency virus. This is the name of virus. When this virus enters in our body, it causes what? AIDS.
क्लियर? यस सर। इसमें आते कौन है? तो इसमें जो वायरस आते हैं दे आर कैटेगराइज्ड अंडर रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस मींस व्हाट? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. रेट्रोवायरस किसको सर बोलते हैं? आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है. फिर से बोलो, रिपीट इट. सर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर. Retrovirus means the viruses which contains RNA as their genetic material. Clear? अब जरा एक डायग्राम है पेज नंबर 155 पे. मार्क इट देयर. वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. मेनी टाइम इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम टू ड्रॉ द कंप्लीट डायग्राम. बहुत सिंपल डायग्राम है. ध्यान से देखोगे तो एक बार में रेट्रोवायरस या HIV की पूरी साइकिल समझ में आ जाएगी. सी द व्हाट इज अवेलेबल. लेट मी ड्रॉ इट आल्सो. What you can see that this cycle is starting from retrovirus. रेट्रोवायरस हमारे बॉडी में आया. यहां लिखा है इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? RNA होगा. क्लियर? रेट्रोवायरस is containing RNA as genetic material. Here you can see one cell is there. This retrovirus is entering in animal cell. किसी कारण से ये हमारे बॉडी में आया. What are the reasons behind it? We will study it. This retrovirus is entering in our body. Entering in our body means this retrovirus is injecting what? RNA in animal cell. इसने अपने RNA को हमारे सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया. क्लियर? क्या होगा? See the one next point which is given. Viral DNA is produced by reverse transcription. This RNA undergoes the process of reverse transcription. Before to understand it, we should be very clear with the term transcription. What is transcription? Palak? सर आरएनए से प्रोटीन बनता है. पूरा जरा प्रोसेस बताओ. एक हमने वर्ड पढ़ा था सेंट्रल डॉग्मा. टेल मी. सर जब डीएनए से हम लोगों को मतलब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम लोग को जब न्यूक्लियस से कहीं मैसेज भेजना होता है विद इन अ सेल, तो जो न्यूक्लियस होता है वो डीएनए से एमआरएनए बनाता है, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं, और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. इसी को हम लोग सेंट्रल डॉग्मा बोलते हैं. वेट करो, लेट मी राइट. डीएनए से क्या बना? एमआरएनए. और एमआरएनए से क्या बना? प्रोटीन. Correct? As per you, the process in which DNA is produced, mRNA is produced from DNA, we call it as what? Translation. Sorry, it's wrong. Wrong है? कौन बोला? हाँ ब्यूटी बोलो. Yes, sir, transcription होना चाहिए वहाँ पे. This is not translation, it is Transcription, sir. transcription, and this is translation. So what? ठीक है. शुभम, you want to say something? Yes, शुभम. हाथ नीचे हो गए. शुभम बोलिए. हो गया. नेटवर्क इज नॉट प्रॉपर. हमारी आवाज नहीं आ रही है. नेटवर्क ठीक नहीं है. म्यूट योर माइक. ओके. So this is the simple process. This is in the molecular biology we have studied it as what? Central dogma. इसमें डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है. मतलब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? डीएनए से आरएनए बनेगा. क्लियर? हमें अभी यहाँ पर जरूरत इसी की है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है. बट हियर व्हाट इज हैपनिंग? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. In transcription, what we can see on board that RNA is getting produced from DNA. DNA से RNA बन रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा मतलब क्या होगा? ठीक इसका उल्टा हो जाएगा. यानी RNA से क्या बन जाएगा? DNA बन जाएगा. क्लियर? So it means what? Even this retrovirus is injecting its RNA in animal cell. This RNA is undergoing the process of reverse transcription, after which it will result in formation of what? वायरल डीएनए बन जाएगा. किसी को यहाँ तक कोई डाउट? नो सर. ओके. Now what will happen? This viral DNA will now enter in the nucleus of
पहले ये सेल में गया, सेल से कहां चला जाएगा, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में गया, और ये इसके न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस में क्या होगा, एनिमल का डीएनए होगा. नेक्स्ट स्टेप विल बी एनिमल डीएनए, एंड दिस एनिमल डीएनए विल फ्यूज विद व्हाट, वायरल डीएनए. यानी एनिमल के डीएनए और वायरस का डीएनए आपस में जुड़ जाएंगे. ये वायरस के डीएनए की खास बात होगी. और उससे भी बड़ी खास बात क्या होगी कि नाउ दिस वायरल डीएनए विल टेक द कंट्रोल ओवर एनिमल डीएनए. इज इट क्लियर? पहले एनिमल डीएनए से वो जुड़ा और उसके बाद वो एनिमल डीएनए के ऊपर अपना कंट्रोल काबिज कर लिया, स्थापित कर लिया. इट मींस व्हाट कि नाउ दिस कंप्लीट सेल, ये जो पूरा सेल यहां से ड्रॉ किया गया, ये सेल तो था एनिमल सेल, बट व्हेन the DNA, the role of DNA of animal cell is overtaken by viral DNA. Now this animal cell will start to behave like what, viral. समझ रहा है? इस एनिमल सेल के ऊपर वायरस अपना कब्जा कर लेगा, और अब ये जो एनिमल का यानी एनिमल के बॉडी का सेल था, ये किसकी तरह काम करने लगेगा, वायरस की तरह काम करने लगेगा. जितने बार ये एनिमल सेल डिवाइड होगा, उतने बार इस वायरस की मल्टीपल कॉपीज हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती चली जाएंगी. जितने बार एक वायरस से 2 वायरस बने, वो फिर दो नए सेल को अटैक करेंगे, फिर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे. यानी मल्टीपल कॉपीज ऑफ वायरल डीएनए विल बी प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी if a single HIV virus has entered in our body. समझ रहा है? अगर एक HIV वायरस भी हमारे बॉडी में एंटर कर गया, तो that single virus itself is capable of producing multiple viral copies by this process, in which we have to keep in mind the process of reverse transcription. Is it clear? Yes, sir. Now see what is present in animation. Let me share the screen. First discovered, it has now become a pandemic, spreading through human populations around the world. In the last 25 years, it is estimated to have killed 25 million people around the world. AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. As the name suggests, AIDS is a disease of deficiency in the human immune system, which is acquired during the lifetime of an individual and is not a congenital disease. AIDS is caused by the human immunodeficiency virus, or HIV, that belongs to a group of viruses known as retroviruses, which are known to have an envelope enclosing the RNA genome. The HIV infection is usually transmitted through any one of 4 ways. Through sexual contact with an HIV-infected person, transfusion of infected blood, sharing infected needles, and from an infected mother to a child through the placenta. You can write it or take the screenshot. These are the 4 common methods because of which HIV is transferred from infected person to normal person. इसमें कोई नई चीज नहीं है. Everybody is knowing. If any doubt will be there, just raise your hand. So, other than children born to HIV-infected mothers, people most susceptible to AIDS are drug abusers who use needles too often to take drugs intravenously, individuals who have multiple sexual partners, and patients of diseases such as thalassemia or dialysis who require frequent blood transfusions. It is evident from these examples that AIDS spreads only through body fluids. It is not transmitted by mere touch or physical contact. Therefore, it is advisable that HIV or AIDS-infected people are not isolated from their family and society for their physical and psychological well-being. The incubation period of AIDS, that is, the time lag between infection and appearance of AIDS symptoms, ranges from a couple of months to many years. Okay, keep it in mind. The
The symptom can appear in our body immediately within a month or it can remain for 4 to 5 years. ऐसा भी हो सकता है कि आज HIV वायरस बॉडी में एंटर करे और 4-5 साल बाद उसका इफेक्ट हमारे बॉडी में दिखे. क्यों? जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी ठीक ठाक होगी उनकी इम्यूनिटी पहले इससे फाइट करेगी. जब इम्यूनिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी then only symptoms will start to appear. Once the HIV virus is inside the body, it enters the macrophages, where RNA, the genome of the virus, replicates to form viral DNA, aided by enzyme reverse transcriptase. The viral DNA takes over the host cell's DNA and directs infected cells to produce virus particles. The macrophages produce an army of viruses, therefore acting as an HIV factory. ठीक है, यानी हमारा ही सेल यहाँ पर एक HIV फैक्ट्री की तरह काम करने लगा. इट मींस व्हाट कि दैट सेल वाज ऑफ एनिमल सेल बट नाउ दैट एनिमल सेल इज वर्किंग एज अ फैक्ट्री टू प्रोड्यूस व्हाट HIV cells. At the same time, HIV enters helper T lymphocytes and produces progeny viruses, which, when released into the blood, attack other helper T lymphocytes in the body of the infected person. The process is repeated till the number of helper T lymphocytes gradually decreases inside the body, resulting in reduced production of antibodies, which affects the immune system. The infected individuals suffer from diarrhea, fever, and weight loss. Any doubt? अब तक किसी को T lymphocytes पे इसका इफेक्ट हुआ, because of which the immunity of body will keep on decreasing, and once the immunity is decreased, यहाँ पे 2-3 बीमारी का नाम बताया, not only 2-3, any disease can easily infect that particular person. They become so immune deficient due to the loss of helper T lymphocytes that they are vulnerable to infections caused by bacteria like mycobacterium, viruses, fungi, and even parasites like toxoplasma. Had the HIV virus not infected the body, these infections would have been naturally fought by the body's immune system. The ELISA or enzyme-linked immunosorbent. Already I have told you about ELISA test. इससे हम आसानी से अपने बॉडी में पाए जाने वाले जितने भी एंटीबॉडीज हैं उनसे उनको डिटेक्ट कर सकते हैं. HIV के लिए ये पर्टिकुलर टेस्ट बना, which is called as ELISA. Assay test is commonly used to diagnose AIDS. इसको याद रखेंगे कि for diagnosis of AIDS, ELISA test is performed. Whereas antiretroviral drugs are used to treat AIDS. However, drugs can only prolong the life of an AIDS patient. Death is inevitable due to the gradual loss of immunity. Since AIDS has no cure, prevention is the key to keep it at bay. It is important to ensure that blood banks have safe blood and only disposable needles and syringes are used. Efforts must be made to control drug abuse. Sex education must be imparted to the masses so that people indulge only in safe sex. And condoms should be freely distributed and regular checkups made a must among susceptible populations. The WHO has started several initiatives to check the spread of AIDS. In India as well, some NGOs and organizations like NACO, इसको याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO, that is, the National AIDS Control Organization, work to create awareness about AIDS so that the disease does not spread due to ignorance. These organizations encourage that HIV infection is not hidden or it may spread further.
Moreover, awareness is also important so that society doesn't shun AIDS patients. Together with the medical fraternity and treatment, society plays an important role in the mental well-being of an AIDS patient. Therefore, though AIDS is caused due to acquired deficiency in immunity due to ignorance and unsafe lifestyle practices, AIDS patients need our help and sympathy rather than our disapproval. The word cancer. Okay, this was the complete concept of AIDS. Go through the book. If any doubt is there, you may ask me anytime. From tomorrow onwards, we will start the new topic, which is very important. कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के जमाने की तो सबसे ज्यादा कॉमन डिजीज होती चली जा रही है. तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद दिस हेडिंग, दैट इज कैंसर. फॉर टुडे इटसेल्फ आई एम स्टॉपिंग.